Let's begin our second part of the Omna's journey from the window, chapter number 7 for the class 4th. Date is 17th May. Let's read it and I will try to explain it bilingually so that you can understand the content, and some questions I have attempted for you so that you can write down the answers, but few I have left because the answer of those questions you have to write down by on the basis of your own experience. Okay, children, now let's begin our chapter. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. We got off the station at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere, fields with rich soil and crops, hills covered with trees. So उनका जो 17th का मॉर्निंग की जर्नी थी वो कहाँ तक पहुँच गई थी? गोवा मडगांव स्टेशन तक, जहाँ उन्होंने चाय ली और अपने लिए वाटर फिलअप किया। उसके बाद उसने बताया कि कैसा सीन था कि फील्ड्स जो थे, बाहर की जो एरिया था, वो उसने देखा कि दैट वाज ग्रीन इन कलर, जिसकी उसने पिक्चर भी दी है, और दैट वाज फिल्ड विद ग्रीन क्रॉप्स, और उसको वो हरी हरी क्रॉप से भरी हुई थी। जबकि आपको याद होगा कि इसके पहले जब वो जैसे ही अहमदाबाद से बैठी थी तो उसने बताया कि द फील्ड्स आउटसाइड वर ब्राउन, यानी कि वहाँ की जो कलर था सॉइल को ब्राउन था, यहाँ का रेड है, और वहाँ ड्राई था पूरा, और यहाँ पर ग्रीन क्रॉप से भरा हुआ है। Now let's come to the next part. Sometimes I can see some small ponds and far away behind the hills more water. I can't make it out that if it is a river or the sea. ये मैं भी आपको बताऊंगी. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. क्योंकि यहाँ पानी बहुत है, hills हैं, greenery थी, तो यहाँ की air dry थी cooler थी, ठंडी थी in comparison to the air of अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है गुजरात में, तो वहाँ की एयर हमेशा ड्राई रहती है और हॉट वेदर ज़्यादा रहता है। The train passed a level crossing. People are waiting on both the sides of the crossing for their train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, motorcycles, scooters, and even tongas and bullock carts with people and goods in them. Some people do not switch off the engines of their vehicles even while waiting at the level crossing. There is a lot of smoke and noise. I see some people going under the bars of level crossing. How dangerous this is. That is a scene of क्रॉसिंग मीन्स जहाँ से उनकी ट्रेन को गुजरना था, कि इतने सारे व्हीकल्स खड़े हैं और उसमें से भी कुछ लोगों ने अपने इंजन्स को अभी बंद नहीं किया है, और इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस कुछ लोग तो इसके बार के नीचे से भी निकल रहे हैं. दैट इज़ वेरी डेंजरस. At times, our train crosses another train. Unni and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast, we always got off confused. तो ये अक्सर होता है, बहुत मज़ा आता है कि आप एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन जो बाईपास हो रही है उसको आप काउंट करने लगें, बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू काउंट, बिकॉज उस वक्त दोनों ट्रेन की स्पीड प्लस हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो वो डबल स्पीड में आपको नज़र आती है. आपकी ट्रेन एक तरफ चल रही होती है, दूसरी जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है, इसलिए बहुत आसानी से उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सी द क्वेश्चन जो इसमें दिए गए वो मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं सो दैट यू कैन डू इट वेरी वेल, बट मैं आपको सिर्फ कंटेंट पार्ट ही पढ़ा रही हूँ. क्वेश्चंस आप रीड करेंगे और आंसर्स को लिख लेंगे. नाउ लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो. ये भी 17th का ही है, लेकिन 8:30 का मीन्स आधे एक घंटे के बाद का है. लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज. सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज खुड खुड. I opened my eyes. Guess what I saw? Our train was crossing a very big river on a very long bridge. As it was crossing the bridge, it sounded very different. The wheels rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. When I first looked down, I felt giddy. It was really quite scary. The river down below was full of water and had some boats. I could also see some fishermen on the banks. I waved at them, but I did not know if they could see me. तो उसने बोला कि जैसे ही ने सोचा कि मैं लेट जाती हूँ, तभी उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी ट्रेन की, और जब उसने देखा तो उसकी ट्रेन एक ब्रिज से क्रॉस कर रही थी. तो वो आई फेल्ट गिडी मीन्स वो एकदम जो हिलने लगी उसको, और वो डर गई उससे. ठीक है, और इस तरीके से क्योंकि उसने ऐसी आवाज़ ट्रेन की
नहीं सुनी थी, तो डर लग रहा था उसको। तो उसने देखा कि वहाँ उसको कुछ फिशरमैन्स भी नज़र आए जो नदी के किनारे पर थे, और उसने उसको वेव किया। उसने पता नहीं पहचाना कि नहीं, इतने दूर से वो लोग देख पाए कि नहीं। Alongside our bridge there was another bridge for the buses and cars. This was built differently from ours. I think going over one bridge was more adventurous. मीन्स कि उसने देखा कि हमारा ब्रिज जो था वो इस तरीके का था, और दूसरी तरफ जो ब्रिज बना हुआ था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का था, तो उसको वो भी देख के एडवेंचरस फील हुआ। दीज आर सम क्वेश्चंस विच आई हैव गिव राइट डाउन द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ माई feeling, and if you can change the answers of this, because just like this, have you seen any bridge? So yes, as I am living in the Prayagraj, so my answer is yes, in the Prayagraj. If you are living in the Goa, you can write down the answer yes in the Goa, or the name of the city you can write down, so you can change the answers. Now let's come to the next part of the chapter. The last few hours have also been exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. It was bright and sunny outside. Suddenly, everything became dark. It felt a little cold out inside. I afraid. Then the lights in the train came on, but outside it was very dark. Somebody says, "We have entered a tunnel. This goes through right through the mountain." The tunnel seemed to go on, and then just as suddenly we were on in the daylight again. Outside it was sunny, bright and green. The train had crossed the tunnel. Appa explained that we were on the other side of the mountain. Since then, we have passed through four smaller tunnels. Now I am enjoying going through the tunnels. So it is also very different experience. जब आपकी ट्रेन टनल से जाती है तो अंदर अंधेरा हो जाता है, इसलिए टनल के अंदर जब ट्रेन जाएगी तो उसके अंदर उसकी लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। ओके, और आपको ये एक फैक्ट याद कर लेना चाहिए, मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, कि द रूट फ्रॉम द गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। जस्ट इमेजिन कितना एक्साइटमेंट होगा इस ट्रेन रूट पर। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज, जब रात के 12 o'clock हो चुके हैं और 15 मिनट्स पास हो गए हैं। नाउ इट इज़ दिन के, इट इज़ आफ्टरनून। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, एंड वी ऑल्सो बॉट सम बनानास. They were very small and very tasty. The scene outside has now changed. Now we can see many coconut trees, green fields everywhere. Amma says that these are paddy fields. The houses in the villages look very different. People's clothes are also different from that we see in the Ahmedabad. Most people are wearing white or cream colored dhotis and saris. Many people who were with us from Ahmedabad have got off. People have also got on the train from different stations. And Sunil's family is getting off at Kozhikode, which comes at around 6 o'clock in the evening. We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad, and you will also like Sunil and Anne. Okay, this is the way. And these are the states through which the Omna's journey passes: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, and Kerala. The next part is these things. Now it is night. रात हो गई है, उसके फ्रेंड्स उतर चुके हैं. We have also started packing up. The train has also reached the Koyattam in about 3 hours. That is where we have to get off. उनको कोयटम स्टेशन पर उतरना, उनका लास्ट स्टेशन है ये. Tonight we will go to वलीअम्मा's house. वलीअम्मा's मौसी को कहा जाता है, बहन की सिस्टर को. Tomorrow we will take the bus that we will take us to the Amomma's village. We are all quite tired. After all, we had been on the train for 2 days. What a long journey it has been. We had a lot of fun. I will put my diary away now, and I will write again after we reach Amomma's हाउस. और वो उसने कहा कि मैं अपनी डायरी को क्लोज कर रख रही हूँ, और अब अमू अम्मा के घर जाऊँगी तभी मैं लिखूँगी. अमू अम्मा जो है वो उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है मम्मी को मीन्स नानी जी को मलयालम में. मीन्स ये दोनों वर्ड्स जो वली अम्माज और अमू अम्माज हैं, ये मलयाली वर्ड्स हैं. मलयालम एक लैंग्वेज है, जैसे आपको देखो यहाँ बताया गया. मलयालम केरला की लैंग्वेज है, कोंकणी गोवा की है, मराठी महाराष्ट्र की है, गुजराती गुजरात की है, और कन्नड़ कर्नाटका की. सेम ऐसे ही आप में पूछा है कि आपके घर में
मम्मी की सिस्टर को क्या कहते हैं? हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारे यहाँ मौसी कहते हैं, मम्मी की मम्मी को नानी जी कहते हैं, पापा की सिस्टर को बुआ जी कहते हैं और फादर की मदर को दादी जी कहते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको देखिए। इफ यू लाइक इट, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड give your comments in the comment section also. I will be thankful for you to comment my videos. Thank you very much.